सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति हरि शांति शांति। ओम। नमस्कार प्रणाम महाराज। everyone, welcome प्रणाम everyone. महाराज जी। Ustad, प्रणाम हरे आपके कृष्ण। from various प्रणाम places you are joining. ठंड कैसी है आप प्रणाम लोगों के स्वामी यहाँ जी। पे? बहुत ठंड है महाराज। प्रणाम स्वामी जी। महाराज आप नमस्ते। दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे हैं? हम तो दिख रहे हैं। दिख रहे हमको तो दिख रहा प्रणाम स्वामी जी। अरे अपने हृदय में भगवान को देखो, हमको देखने से क्या फायदा? हम आप में ही भगवान देख रहे हैं। हाँ ये चलो नमस्कार। भाई, आज शुरू करें। करने आते हैं महाराज। हाँ जी जी। तो अब तो स्टार्ट करेंगे। आज समरी करेंगे देवाशीष सहा ना। प्रणाम महाराज। यस अच्छा भाई, हाँ शुरू करें। यस। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। I bow down at the holy feet of Swami Bhumeshananda Ji Maharaj for taking the classes on every Sunday and enlightening us and guiding us in our spiritual practices for more than 3 years. The text or the articles keep us busy for the entire week. Maharaj Ji, on behalf of everyone of this class, please accept our Satsang Pranam. We need your blessings to go forward. My pranam and namaskar to all the devotees. Today's topic is the eternal companion, the life and teachings of Swami Brahmananda Ji Maharaj. This book was written by the most revered Swami Jyotisharanand Ji and Swami Prabhuvananda Ji Maharaj. All the members of Ramakrishna order know Brahmananda Ji Maharaj as Maharaj. Therefore, I too have addressed Swami Brahmananda Ji as Maharaj in my summary. Once Maharaj Ji said, be self-reliant. This, the ability to do things and make decisions by yourself. Effort is indispensable to success in spiritual life. Follow some discipline for at least 4 years. Then, if you don't make any tangible progresses, come back and slap my face. Sri Ramakrishna had 16 disciples, direct disciples. In my opinion, nobody has so emphatically, convincingly, with confidence used such kind of words. The first part of this book contains Maharaj's biography, and the second part, his teachings. I will touch almost all the points except the repetitions, and I will be taking 16 minutes approximately. Varanasi, 27 February 1913. Maharaj is asking the disciple, do you perform prayer and meditation nowadays? Disciple, no Maharaj Ji, not at all. Maharaj, every day you should perform a little japa and meditation. That will give you peace of mind and steadiness. Disciple, what shall I repeat? The blessed name of God, the name of that form of His which inspires the greatest faith and devotion in you. That is the name you choose for japa. Disciple, without a form, meditation is not possible. What form shall I meditate upon and where? Maharaj, you must meditate upon that form of His you like best. You can place Him in the heart or outside. A wise guru, however, will understand the particular form of God that calls forth the greatest faith and regard from the disciple and will instruct him to meditate on that. Then there is a mental worship. As you with offerings of flowers, sandal paste, burning of camphors, etc. Exactly so is the worship in the mind. In the mind, you have to picture the form of the deity you choose. In the mind,
you are to offer all holy things used in worship, and in the mind again you have to adore him with all the reverence and devotion of your heart in humble supplications, to pray to God, to ask earnestly and humbly. Procure a new asana to sit upon. Keep it apart to be used solely for meditation, worship, and such things. Also, choose a solitary retreat for your sadhana. Remember always that here in the sacred city of Varanasi, spiritual realization is easily attainable. Do not begin your meditation immediately. Sit silently, couple of minutes or so, and try to make the mind blank, so that no alien thought may cross your mind. For a year or two, you will have to exert your mind to the limit of its power. Thereafter, meditation will become natural to you. In the event of great pressure, fix your mind on God for a moment, then bow down to Him. You can do this in exceptional circumstances, but not always. Regarding आवाज नहीं आ रहा सर क्लियरली हाँ आवाज आ रहा है वेरी क्लियर आवाज आ रही है बॉस तो क्लियर है regarding moral conduct, observe these two rules. Be truthful always, and honor and worship all women as mother. Chapter 2 on Guru. Disciple. How can love for God grow? Maharaj. By sadhana and prayer. Disciple. Is it possible for those who live in the world? Maharaj, is there anyone outside the world? It is possible but difficult. Disciple, when dispassion comes, should one renounce the world? Maharaj, yes, that is what is called Vairagya. Disciple, is it possible without a guru? Maharaj, I think never. Disciple, how to know a guru? Maharaj, by moving with him closely for some time. Varanasi, 3rd February 1921. Disciple. The scriptures speak of service to the Guru as a necessary means to spiritual realization. How far is this true, Maharaj? It is necessary at the preliminary stage, but afterwards the mind itself plays the part of the Guru. When it becomes absolutely pure, the Guru should not be looked upon as a human being. His physical body is the temple in which resides the Lord. Belur Math, 1918. The Guru shows the disciple the path to eternal and protects him from all troubles. Putting great faith in the word of the Guru, let the disciple live according to them. After a time, he will feel that the impurities of his mind are vanishing and divine life is gradually making its appearance within. Then the Guru appears before the disciple and revealing the Ishta to the latter and disappears. Realization of God is impossible without purification of the heart. Mind becomes pure through japa. While repeating the mantra, you should remember God. One thing needed is a faith in the Guru. When this is gained, everything is gained. God alone, who is the author of this world enchanting, can free man from its meshes. It is only after God realization one gets this inner vision. Then only can one truly understand the difficulties of another and give him proper instructions. Now, 10. To a monastic disciple, Bhadrak, Orissa, 1915. My advice is, give your mind wholly to him and free from useless thoughts or work. Engage yourself always with
dhyana, japa, and constant remembrance of God. Do not indulge in idle talks and don't give advice to others. Disciple, how many hours in a day should we spend in japa and meditation, and how many again in japa, in puja and study of scriptures? Those who lead a purely meditative life should spend at least 16 hours in japa and dhyana. As you continue, you practice will be able to prolong this period. The more the mind is turned inward, the greater will be the joy. Once you get a taste of it, the desire for it will grow stronger and stronger. Then your mind itself will tell you how long you are to devote to sadhana. One must think of God intensely. Disciple, what should I do when at times the mind seems unwilling to meditate? Should I then study sacred books or try to engage the mind forcibly in meditation? Maharaj, in the preliminary stages, you must force your mind to meditate in order to cultivate a strong habit. The very nature of the mind is to evade, run away from, shirk work, and seek ease and comfort. But nothing can be earned without hard labor. Anyhow, keep the mind always engaged in the thought of God. As disciple, as the process of Hatha Yoga, are the processes of Hatha Yoga, Pranayama, Asana, etc. necessary for spiritual practice? Maharaji, what is most essential is to meditate on God, repeat His name, and pray to Him incessantly with a devout heart. What is important is to be in constant touch with Him. Next, disciple, how long should a sadhaka sleep? Maharaji, ordinarily 4 hours sleep is quite sufficient for a sadhaka in good health, and sleep for more than 5 hours is not a rest but a disease. It does great harm. Disciple, what rules are to be observed regarding food? Shall I accept whatever is offered to me or make any distinction? To eat too much sweet or sour food is bad, and kalai dal or urad dal or any preparation of it is also very harmful to the growth of spiritual life. Under no circumstances he fill more than 2/3 of his stomach. This will increase his strength and energy, and he will be able to devote them for good purpose. But if the stomach is overloaded, he will have to spend all his energy in digesting his food. He will find no energy or inclination for meditation. Next, disciple, should I observe silence at the time of sadhana? What is to be done when some unavoidable circumstances compel me to speak, or if the mind becomes restless? A forced silence and too much talk are both harmful. To be silent inwardly is surely better than to maintain external silence. Moreover, instead of binding yourself to any forced silence, if you talk only so much as required, it will not do you any harm. Disciple, how much clothing should a sadhaka have, and to what extent heat and cold to be borne? Maharaj, as for clothing, you should keep only as much as is just necessary to keep your body healthy and protect it from heat and cold. Your idea is to realize God, not to bear unnecessary hardships. Disciple, I have no power to do anything without your help. Please bless me that my faith and devotion to God and you may be firm and unflinching, and that I may be fit to receive your grace.
There is infinite strength in you. Never lose faith in yourself. My boy, God is in you, and His grace too. He is gracious too. He is gracious to all. Go on with your sadhana as instructed by the disciples of Sri Ramakrishna and continue it till you realize Him in this very life. Do not be troubled with questions anymore. Do something positive. Make the best of this opportunity and be blessed. Pray to God with a sincere heart that even the least taint of desire for name and fame may not soil your good heart. Sri Ramakrishna Pranastu. Okay. Okay. Take it. Now questions. So today, first of all, Itu Ghosh. Questions. Pranam Maharaj. My first question is from the text, if you can carry on your sadhana for 2 years at a stretch, I'm sure you will gain some realization. Yes. So my question is, to reach at this condition, how much effort and time we need? See, it is not, frankly, it is not so easy. If Maharaj has told 2 years, it will be done. You have to, a tremendous intensity, day and night you have to do, dedication has to be done. More effort, less time. That is the point. The more effort you do, lesser the time will say. He has said 2 years. Yes. So this is the intensity has to be done. It all depends upon the intensity. Otherwise, it not 20 years also, it is not possible. Okay. So initially, now these question answers were given to young brahmacharis, 15-20 years of age. They have just joined, and they were his disciples. For them, he had given for 2 years intensely, day and night. You do japa and meditation. So those things are not applicable to us. We have become old, and in the Yes. householder life, very difficult. Okay. 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 My second question is, if the Guru is a perfect and illumined soul, the ego of the disciple is destroyed in no time. So my question is, how and when it becomes possible? Whereas these days Guru is initiating so many different types of devotee. Now, nowadays, that thing is a very difficult. Nowadays, it is difficult. Yes. Gurus are also real gurus, and chelas also are real chelas. You know, I understand by what I mean by chela. वो गुरु भी दिखाने के लिए है, चेला भी दिखाने के लिए है. And we chelas also don't have that intense discipleship, Intensity. and guru also are not of that standard. So now it is not very easy. That is the thing. Okay. Same similar question, huh? Third question. Another point you should remember, whoever is supplying you with food, other necessaries, gets a share of your merit. So my question is, this is complete new information for me. So please explain in that way, how it works. In what way it works? No. If you know, if you give support sadhus, you will get merit. तुम्हारा पुण्य तो होगा. नहीं, उनका पुण्य का कुछ फल मुझे मिलता है. वो साधु जो है, ब्रह्मानंद जी बोलते थे कि तुम जब किसी का खा रहे हो, भिक्षा करके खाते हो ना, तो थोड़ा सा ज्यादा जप करो, जिससे जिन्होंने भिक्षा दी है उसका भी पुण्य होगा, उसका तुम्हारा जो फल है उसके अंदर चला जाएगा. So you have to do more tapasya than simply if you are nothing, you are not to depend upon anything else. So whosoever sustains you,
gets a merit of the sadhu's punya. Acha. That is true. Acha, okay. Now, my fourth question is, forced silence and too much talk are both harmful. To be silent inwardly is sure better than to maintain external silence. So what is this forced silence and silence inwardly? Forced silence. You are sitting and you want to talk, but you are forcing, no, I will not talk. Our mind is constantly restless and we want to talk too much. But no, we have been told not to talk. The mind is Okay. completely restless and you are not allowing it to speak out. A bacha hai na, our mind is like a child. Mhm. A child is constantly playing, trying to run away, so forced to sit down, बैठ जाओ, चुप नहीं कर, बोलना नहीं. So it is like this. Our mind also is like this. That is called Forced silence. But we are And bubbling from inside. silence inwardly. So inner silence, there is in that there is no desire to sleep also. Your inner silence is when mind becomes completely quiet without restlessness. That is the ideal thing. Anyway, when we sit for meditation, japa, we will definitely have to remain quiet mentally also, mental silence or outer silence. Both have to be there when we sit for meditation. So get in the habit of meditating 2 hours, at least 1 morning hour, 1 hour. And then also whenever you get chance, try to sit quietly, silent. Okay. Acha, regarding that merit, you see, even we are living in Ramakrishna Mission, and the Ramakrishna Mission is running by the donation of the devotees. So definitely the devotees who sustain the Ramakrishna Mission get the merit of the sadhu's punya also. Okay. Hmm. Good. Acha. Now Devashish, Yes. कुछ तो मिलता है. Pranam जी। Maharaj. Devashish, अरे ये तो हाँ। इतना मिलता है, अब ये पूरा के पूरा कुछ तो हम तो सब मिलेगा. दे देते हैं, हम संडे को सब दे देते हैं. जी. Ji. Question हाँ. number 1, page Hmm. 4. Question number, what is meant by for a year or you will have to exert your mind to the limit of its power? Please explain. We already discussed, meditation is पूरा not दम लगा. natural. Unless meditation becomes natural, Yes. you don't have the habit to work. So you have to work hard to develop a habit of meditation. That's why for at least 1 year, you have to struggle hard with your mind. It's constantly going away restless. It already discussed in the first question of Itivish Ghosh. Now, here he's saying the limit of mind. Mind has got no limit. Mind is infinity, no? No. Karuna, can you do it? It is theoretically, mind is infinite. Practically, how long can you exert? Your mind will get retired. Either you will become restless or you go to sleep. Theoretically, mind is infinite. Yes, That is not Maharaj. the point. It is Okay, the question is practical question. Okay. So try Ji, to Maharaj. do meditate. You will not be able to do meditate. After half an hour, you get tired. That means the limit of mind has come. Yes, Maharaj. Ji, Maharaj. So you Thank have to struggle hard. Thank you, Maharaj. Next question hai from the text. Carry on. Therefore, a regular fight with the mind and give it a firm shape. My question is, if we are constantly fighting with the mind, then there will be a tension and it will be difficult to adjust in the family life. We have to adjust ourselves to avoid unwanted situations or so that there is no tension going on inside when we sit for meditation. What is the way out? Now, ऐसा करो for some days, 10 days or 7 days, you go to ashram, solitary ashram. Ji Maharaj. And sit there so that tensions of the family and all those things are not there.
external tensions are not there, the mental tension also will be less. Try to do it once in a while for 7 days. Okay? Ji Maharaj Ji. Hmm. Ji Maharaj Ji. Third question, page 323. Sometimes observing forced silence to the situation works wonder, because I know that if I respond, there will be reaction and from other members. So it is better to keep quiet. Kindly explain. It's okay, that's all right. Thank you, Maharaj Ji. Huh. The next question, Maharaj Ji. Page number 131. Are the family guru and Guru Giri same? Sri Ramakrishna had an adverse opinion on Guru Giri. Is it that Sri Ramakrishna was of the opinion that Guru Giri is a mean way of making a living? It is very definitely, whenever it's like very clearly understood. If a person, there is a family guru, and then gurus don't have any spiritual status, but they go to their family like a panda, they go to the family of who's their guru and they give us our pranami, etc. So that becomes a guru giri. That is very bad. Yeah, I don't know anything about it. What is happening nowadays outside, we don't. अच्छा, तो पर the first question में महाराज जी ने बताया कि disciple को बता रहे हैं that I am sure that you have a family guru. Why have you not taken initiation from him? Maharaj ji is asking that the family guru is bad. If there is a family guru, let encourage that family guru. From the disciple point of view, family guru has to be encouraged. But from the guru point of view, he should see that he does not go into Guru Giri. Oh. Okay. Okay, Maharaj ji. Next question. You must meditate upon that form of his you like best. You can place him in the heart or outside. My question is, how can we meditate the form of the Lord outside? Just as I am seeing you, you are seeing me. When I close my eyes, I can see you, I can imagine you that's in front of me. What is there in difficulty? Everyone imagines so many things. So many things. A boy falls in love with a girl and constantly thinks about her. That is think inside her heart, thinks outside. Oh. So when you see, suppose you see a Krishna's photo and open eye, we see the photo and close the eyes and you imagine outside. What is that? What is that difficulty about it? See the picture and visualize it. Open the eyes, visual, then close the eyes and visualize outside. What is that? Okay. Most of the people that do it, they cannot meditate in the heart. Or you are asking just the opposite. Ulta. Huh? Maharaj, is it inferior or superior is there? If you meditate inside, it's better? Better. Right. Most of the people cannot do it. That's why. No, Okay. it's very difficult. Okay. Next question, Maharaj ji. If you can do it in the heart, there is no need to do it outside. Okay. 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 That is better. Yes. Next question, page 133 में, how to adore him with all reverence and devotion of my heart in humble supplication. ये समझ में नहीं आया. नहीं ये तो humble supplication विनम्र होकर by humble एक तो श्रद्धा भक्ति नम्रता ऐसा होए बांग्लाয় बोले এটা বলছি এটা विनम्र হয় भगवान के पूजा करते হয় भगवाনের चिंतन करते হয় भगवाনের पूजा करते হয় एकदम नम्र भावे करते হয়. Okay. এটা কি আছে ভক্তি ভাবে পূজা করতে হবে আর কি? Okay, Maharaj ji. Think about his qualities and attributes like he is Sachidanand, he is Akhanda Brahma, as all these things. এখানে the main thing is there. You have to have mental devotion or bhakti bhava is even more important.
अच्छा Whether you are thinking of Sachidananda or whether you are thinking of God with 4 hands, whether you are thinking of Thakur with raised hand, that is secondary. Important is what is your mental attitude. That is more important. okay Why you are okay confusing the two things? okay Maharaj. Okay, understood Maharaj. Thank you. Or understood now, again the same thing will come. No. It's question number 7, page 133 and 134. Here Maharaj is asking the disciple not to bother about the mental worship. My question is, without mental worship, is the realization? आपने बता दिया, in the meditation process possibly without, ये तो आपने अभी भी बताया. Next question में जाता हूँ. Page It number, is the same. That portion you read, context is very clear. yeah, just now you have said, तो skip करते हैं. Next question कहते हैं page 134. How to make blank when we sit for meditation so that no alien thoughts may cross our mind. When you sit for sit for meditation, what you do is be alert and quietly see the mind. साक्षी बनो. Meditation start करने के पहले, before any ideas, thoughts you bring consciously in the mind, before thinking the Ishta, try to become sakshi of mind. Be witness of the mind. देखे what are the thoughts coming? Very quietly sit and try to see the mind. And you will find that mind becomes quiet. It becomes blank. जी महाराज. The Maharaj is Sikwanis, and this question, other devotees also have asked this question. Unfortunately, we sit for meditation and just start thinking of the Ishta, and the mind does not get Ishta, restless it becomes. But Swami Brahmananda is teaching, Siddheshwarananda is teaching about meditation. You carefully see, he says, sit erect, relax as much as you can, sit erect, head, neck straight, and relax your body as much as you can. Relax. When he used to do guided meditation, he said, relax your body, relax your hand, relax your feet, relax your mind. And then he said, now look at the mind, what is happening in the mind. Just be a witness of the mind. Mind, you see yourself, what is going on in the mind. This is a process. Before you start your japa and meditation, you have to relax, and look at the mind. You will find gradually the mind becomes quiet and it becomes blank, as if no thought comes in the mind. जी महाराज. जी महाराज. Next question. We met our Guru during initiations, but the kind of interactions mentioned in the paragraph was not available to us. When the disciple went astray, the Guru would bring him back. Kindly explain what to do. No, what to do? What is the question? But there is no Guru and you are a disciple and you are astray. What is your question now? Question is that our interaction with the Guru when we took initiation is minimal. We hardly had any interactions. Now, Yes. Then Maharaj is saying that be with the Guru and move, and Guru will guide you. So that kind of but after some time, Guru also will die. Suppose you have an interaction. I was initiated by Yatishwaranji. Twice I went to Bangalore, stayed for 5-7 days. But now Giteshwaranji is passed away. Now what will happen? Most of the people, our gurus, have passed away. It does not apply there. The question does not apply there. So all our gurus have passed away, isn't it? Yes, Maharaj. And then the question does not arise. Why are you asking this question? Okay, Maharaj. Thank you. He's asking to do then. That is what he's asking. Any other holy company? There's something 10 or no? No. Like the Zoom meeting itself is a platform. Upaguru we have to. We have to अच्छा, depend हो on गया other question guru. देवाशीष? जी महाराज जी, प्रणाम.
Acha. Now, Shivani. Ram. Pranam Maharaj. Hmm. Maharaj, मेरा first question है page number 319. Whenever I get up at midnight or very early, I used to listen to Gita or Thakurji. Is it all right as meditation comes after daily routine? So anytime you can, if you get in the night, and if your mind is quiet, read for 10-15 minutes Gita, and then if you are very alert, you can meditate also. No difficulty about it. Maharaj, my question is, I used to listen, not read. No, that's all right. No, it is not the question of listening or reading. What is important is whether your mind is sharp, whether mind is alert, whether at 3 o'clock or 4 o'clock your mind is absolutely alert and so then you sit for meditation, you can meditate. ये कहाँ आवाज आ रहा है? Switch off your phone. Somewhere there is phone going on. Okay. ये खट किसका हो रहा है फोन? Second question. Second question. Second question, page 320. I also used to sleep for 4-5 hours. Is it all right as instructions are for pure sadhak? And I do not That's all right. That's all right. Doesn't, it all depends upon the individual. It's not necessary to pure or impure sadhak, etc. All individuals, it depend upon the physical condition. Yes. Okay. No difficulty. Okay, Maharaj. Thank you. Maharaj, last question, page 321. In my case, I don't know if it is food or body type. I feel very energetic in the early morning. As per the instructions given in this paragraph, unable to sit for a long time for meditation. Try to control your mind. Try to Okay. control your mind and try to control your body respectively, gradually. Sit, rest without moving any part of the body for 15 minutes at least. 15 minutes? After 15 days, increase to 30 minutes. Like that, you have to increase. First of all, you have to make the body absolutely still, not moving any part of the body. And then gradually you control your mind also. But you must get into a habit of sitting for a long time. You are young and then, see, Swamiji will say 1 hour, 1.5 hours, without moving any part of the body, you should be able to sit. If that you can do, your mind also will become quiet. Okay. As you told me earlier also to see Thakur's Leela. So that I'm thinking that it is because the mind is restless. Gradually you have to reduce the Thakur's Leela. Earlier Thakur is going out to the Panchavati and going to the temple, etc. After that, don't allow Thakur to go to Panchavati. Only allow him to go to the temple. Okay. And then gradually even temple will not go. Thakur will only be in a room, in a spot, moving inside the room. And finally, Thakur will remain only sitting in the chair, on the spot. Gradually, you reduce your restlessness of mind. Okay. Thank you, Maharaj. Pranam. Dilip Bhai. जी प्रणाम महाराज जी. महाराज जी, पहले my first question is पेज नंबर 131. ये उसका डिस्कशन तो हो गया है, पर फिर मेरे को कुछ समझना है. What is the meaning of family guru? नहीं, जैसे अभी बोला ना, अभी एक ने कहा ना कि हमें तो फैमिली गुरु से दीक्षा मंत्र मिला है. कुछ परिवारों में होता है फैमिली, particularly in Gujarat, in Bengal. There are family gurus are there. But if it is not there, don't worry about it. अच्छा, और ये गुरुगिरी आपने बताई, ये गुरुगिरी क्या होता है? गुरुगिरी है, फैमिली गुरुज जो है वो don't do anything. They will go to the family, go to the devotees. Regularly go away 15 days and do a little, put a flower on the photo and they give the pranami deo mere ko.
जी ये पैसा कमाने की इच्छा है, भाव। हम तो गुरु हैं तुम्हारे लिए हम प्रार्थना कर देंगे, हम जप कर देंगे तुम्हारे लिए, और तुम हमको रेगुलरली हमारी फीस दिया करो। ये फीस लेना जो है ना, ये गुरु की। महाराज जी, यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ आपकी परमिशन से कि गुजरात में एक सिस्टम है, हमारे ननियाल में भी ये सिस्टम थी कि हर 11 को या पूर्णिमा को हमारे गुरु आते थे, तो एक पूरी थाली के अंदर, जिसको गुजराती में कहते हैं सीधा, सीधा भर के दिया जाता था। सीधा का अर्थ ये होता है 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी अपने घी और कुछ पैसे, इस प्रकार से पूरा देने की एक सिस्टम थी, और वो लेके जाते थे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें गुरुगिरी का सवाल नहीं आते हुए हमारी एक भावना का भी सवाल आता है कि हम एक ब्राह्मण जो हमारे वहाँ आता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। और इससे अच्छा, और ये फीलिंग्स हमारी नानी जब हम जाते थे तो हम बच्चों से ये करवाते थे। ठीक है। हाँ, तो दैट इज गुड। So from your point it is good. हाँ, ये भक्ति भाव है ये। For their point we don't know. Yes. हाँ, तो we are महाराज जी, we are never concerned the other person, what we feel for others. हाँ, तो वो लोग जो है, वो लोग तो उसकी तुम्हारी जो भावना है उसका वो पूरा उपयोग कर रहे हैं, तो they are exploiting your भावना। अरे संसार में यही तो होता है। लोगों की भक्ति भाव को पंडे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कि पंडागिरी गुरुगिरी एक ही है। महाराज जी, ये पंडागिरी आपने बताई, हमारा ये सोच है कि जिस प्रकार से 4 वर्ण थे, वैसे ब्राह्मण वर्ण का काम यही है कि पूजा पाठ करना, और उसके एवज में वैसे लोग उनको खाने का देते हैं। ठीक है, अगर वो करता है ठीक इस भाव से, तो वो बहुत अच्छा ब्राह्मण है जी, बहुत अच्छा ब्राह्मण है। राइट जी महाराज जी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज जी, बाय सिटिंग क्रॉस लेग it is useful to activate सुषुम्ना नाड़ी। ये उसमें सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी क्या? और इससे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। पेज नंबर। अरे तुम इतना कुंडलिनी जागरण में इतने क्यों लगे हो भाई? नहीं, हम नहीं लगे हैं। तो कुंडलिनी क्यों इतने चक्कर में पड़े हो? अच्छा, राइट। और इससे ये क्रॉस लेग में ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है? भैया मेरे तो जागृत नहीं हुई, मैं नहीं जानता। ओके जी महाराज जी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 135। Swami Brahmanand ji says frequent visit of holy place. They said Brahmanand ji has recommended visit of the holy places. Now my question is, moving one holy place to another holy place from time to time, will it not distract the mind of the sadhak? Because he gets various good and bad worldly experiences which left impressions in the mind permanently. Not necessary to go to the holy places. Only those who are restless in the beginning. You are so restless. तुम होली प्लेस में नहीं जाओगे तो नैनीताल जाओगे, अल्मोड़ा जाओगे। अच्छा, हाँ, वहां जाओगे, घूमोगे फिरोगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर जाना ही है तुमको तो बद्री केदार जाओ ना बाबा। ओके। हिमालय जाने की इच्छा है लोगों को, तो उनका चलो बद्री केदार जाओ। यानी हमारा मन रेस्टलेस है, हमारा मन इधर उधर जाना चाहता है, तो इतने सारे तीर्थ बनाती है। और अगर तीर्थ में तुम्हारा सारा तो हृदय में ही वृंदावन का, वहां से कहाँ जाओगे? कितने भजन है उसमें यही कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? हृदय में तो वृंदावन है। यस, ओके। हाँ महाराज जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम गुरु। महाराज जी, ये हिंदी के पेज नंबर 33 पे लिखा हुआ है, अशांति जितनी अधिक होगी शांति भी उतनी ही अधिक मिलेगी। प्यास जितनी ज्यादा लगती है पानी उतना अच्छा लगता है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं शांति चाहिए तो अशांति को उबारना पड़ता है। महाराज जी, व्हाट
टाइप ऑफ अशांति को उभार दो। अशांति वो अपने आप आने दो बाबा। प्रश्न ये है कि भगवान को तो हम चाहते हैं, भगवान के लिए व्याकुल होना। हाँ, भगवान के लिए व्याकुलता तो है नहीं, भगवान क्यों आएंगे? भगवान देखते हैं कि ये बड़ा मजे से है, थोड़ी बहुत सुबह शाम पूजा पूजा करता है और हाँ। मजे में रहता है, उसमें अशांति तो है नहीं। भगवान के करने दो ना, बड़ा अच्छा है, मेरे को क्या करना। जब तो वो व्याकुल हो के माँ माँ चिल्लाए, बच्चे ठाकुर स्वामी जी बोलते हैं, कोई हाँ, ठाकुर की कहानी है, बच्चा खेल रहा है, दिन भर खेलता रहता है, जब माँ माँ करके पुकारता है, जोर से अशांति होती है, तब माँ दौड़ के आती है, उसको गोद में लेती है, नहीं तो खेलने देती है। तो ये व्याकुल ठाकुर कितने व्याकुल थे, माँ दर्शन दो, इतने व्याकुल हो गए कि तलवार उठा के अपने गर्दन पर मारने लग गए थे। ऐसी अशांति की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अच्छा अच्छा, यानी ये अशांति मान अपने स्पिरिचुअल अशांति की बात है। स्पिरिचुअल अशांति है, कह रहे ओके। मेरा कुछ भी नहीं हुआ, सारा जीवन निकल गया है, जी जी, मैं कुछ भी प्राप्त नहीं किया मैंने। अच्छा बराबर। महाराज जी, अब इसके अंदर मैं इंग्लिश में वाला ये पढ़ रहा हूँ। द गुरु शुड नॉट बी लुक्ड अपॉन एज ए ह्यूमन बीइंग, हिज फिजिकल बॉडी इज द टेम्पल इन विच रिसाइड्स द लॉर्ड। If the Guru is served with this ideal in devotion for him, which can then be directed towards God. हाँ, तो क्या बोला है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। हाँ, गुरु दियो बलियारी, गोविंद दियो बताए। बोला तो गुरु जो है, वो गुरु तो भगवान को बताने वाले हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ये मीनिंग सब बराबर जी महाराज जी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी जी ने 3 प्रकार के गुरु बताए हैं, गुरु, उपगुरु और सिद्ध गुरु। ये 3 में फर्क क्या महाराज? उपगुरु है, जैसे गुरु तो आपको जिसने मंत्र दीक्षा दी, हाँ वो तो हुआ मुख्य गुरु। जी, अच्छा, और आप जो ब्रह्मेशानंद से क्लास हो रही है, हाँ, ये उपगुरु। उपगुरु हो गए। अच्छा, और सिद्ध गुरु? सिद्ध गुरु जो बिल्कुल सिद्ध में प्रतीक्षित हो गए हैं, वो हुए सिद्ध गुरु। जो गुरु मंत्र देते हैं वो सिद्ध गुरु नहीं भी हो सकते, उन्होंने सिद्धि प्राप्त नहीं हो, लेकिन मंत्र दे दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन सिद्ध गुरु होते हैं, वो मंत्र भी दे सकते हैं और सिद्ध भी होते हैं, साक्षात्कार भी किया। राइट जी महाराज। महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 6 तो ऊपर मैंने ले लिया था। 7, द गुरु इज अ परफेक्ट एंड इल्यूमाइंड सोल, द ईगो ऑफ द डिसाइपल इज डिस्ट्रॉयड इन नो टाइम। महाराज जी, how to know that the ego is destroyed and how to find a perfect and illumined soul? ये दोनों। ये यदि ईगो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। देखो, क्वेश्चन पूछना बंद हो जाएगा। नहीं, अच्छा महाराज, मैं फिर से पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में समझ में नहीं है सेंटेंस। if the guru is a perfect and illumined soul, this is the first question. The ego of the disciple is destroyed in no time. हाँ, तो गुरु हमको गुरु illumined चाहिए, इसीलिए तो ईगो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। हाँ, कि तुम्हारा जो गुरु है illumined वो इल्यूमिनेट और परफेक्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हारा ईगो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। महाराज, जिसको ईगो रहेगा वो कभी प्रश्न पूछेगा भी नहीं। मैं यही तो बोल रहा हूँ मैं इसको। तो वो बोल रहे हैं कि कहा है कि यदि गुरु इल्यूमिनेट होगा तो ईगो नष्ट हो जाएगा इन नो टाइम। मैंने कहा गुरु इल्यूमिनेट नहीं है, इसलिए तुम्हारा ईगो नष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए तुम प्रश्न पूछ रहे हो। नहीं दिलीप भाई नहीं का नहीं, ego है हमारा जो हमारी जो क्षमता है उतनी नहीं है, ये है प्रॉब्लम। दिलीप भाई का ईगो है ही नहीं। चलो महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, page 141. If a person possesses sincere yearning for God and is eager to follow the spiritual path, he is sure to find a real guru through the grace of God.
Therefore, spiritual aspirant need not feel anxious about finding a guru. Now the question, Yes, क्या है yes, yes. उसमें reverse हो गया यहाँ. हाँ, How तो तुम्हें guru रियल will- नहीं हो गया. जी, If you are sincere, हाँ, if you are sincere, absolutely sincere, you will get God, Guru, real Guru. अच्छा. So I was sincere, I got Guru Yatishwaranand ji. Maharaj ji, now my here question is, how a guru will come through a grace of God by sitting at home or in a jungle or in a lonely place? Guru will come Anyway, automatically by the आज grace of God. साहब इतने देखो, इतने सारे देखो, आजकल तो गुरु जंगल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. जंगल के बंदे ही जो है वो ट्रेन में आते हैं, प्लेन में आते हैं. गुरु जो है सब जगह है. इंटरनेट पे भी गुरु ही गुरु है, सैकड़ों गुरु हैं. कहाँ कमी है गुरुओं की? वो उन्होंने उस जमाने में जंगल की बात कही गई थी. आजकल जंगल नहीं है तो सब जगह गुरु ही गुरु हैं. जी महाराज जी. Now next question. Maharaj ji, Swami Brahmanand ji says, in a young age, what realization is easy. My question is, what is the meaning of a young age? Because in Jainism, the young age is about 7 to 10 years. ऐसा है कि वो यहाँ यंग इंडियन में यानी फिजियोलॉजिकली दृष्टि से, डॉक्टरी दृष्टि से है प्यूबर्टी. प्यूबर्टी यानी 15 बरस की उम्र में जब मैच्योर हो जाता है, पुरुष हो जाता है ना स्त्री हो जाता है, उसका भाव आ जाता है, स्त्री पुरुष का भाव आ जाता है, प्यूबर्टी, इसको प्यूबर्टी बोलते हैं. हाँ, वो जो उसको कहते हैं जवानी, उस उम्र में चालू कर देना चाहिए. ओके महाराज जी, थोड़ा डाइवर्ट करके ये इस पे आप बताएंगे कि ये जैनिज्म में 7 to 10 years के अंदर ये ले जाना चाहते हैं, इसलिए कि बिफोर प्यूबर्टी दे शुड कम. हाँ, उसके पहले ही तैयार हो जाए, उसके बाद में ऐसा पक्का संस्कार पड़ जावे उसका कि फिर और बदले नहीं. हाँ, so that is better in Jainism what they doing. नहीं, दुर्भाग्य ये है कि अगर पीछे बाद में उसके संस्कार, अगर संसार के संस्कार, भोग के संस्कार अगर प्रबल हुए तब क्या होगा? उल्टा हो जाएगा. उसके बाद में जो आगे जाके जब साधु बनेगा तब उसके भोग के संस्कार आगे बढ़ जाए, निकल जाएंगे, और उसके बाद में वो भ्रष्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा. वो थोड़ा ज्यादा हो जाती है बात. जी महाराज. तो आगे जाके फिट नहीं बैठते हैं. अभी संस्कार डाला है लेकिन भाव नहीं है गहराई में, तो प्रॉब्लम हो जाए. जी. Now next question, page 142. The Vaishnava says Guru, God and devotee. If mind is favorable, everything is accomplished. Mind is free from restlessness and mind must be brought under control. And all the three possible if the mind is trained to lead it to relinquish the desire for enjoyment. The glory of renunciation, as it is said in Bhagavad Gita, how the mind is trained for relinquishment of the desire. क्या समझ में नहीं आया, क्या कहा? महाराज जी ये कह रहे हैं कि माइंड को आपको ट्रेन करने का है. अब relinquishment के लिए आप यदि ट्रेन करेंगे then it is better. That Bhagavad Gita says. So how to train the mind for relinquishment? नहीं, त्याग के लिए मन को तैयार करो, ये क्या ना है, ये इंग्लिश. हाँ, ये तो है ना. जी महाराज जी ये लिखा है, the Vaishnavas have this beautiful saying, the jiva has the grace. हाँ, वो गुरु के ऊपर भगवान की कृपा हुई. और क्या है, एक की कृपा के बिना गुरु चला. गुरु कृष्ण वैष्णव. हाँ, गुरु की कृपा हुई, कृष्ण की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई और भक्त की कृपा हुई. लेकिन एक की यानी खुद की कृपा के बिना सब फालतू हो गया. तुम्हें आके वैष्णव जन्म में हुए हो, मंदिर जाते हो, गुरु ने दीक्षा भी दे दी है, संतों से मिलते भी हो, सब कृपा हुई. लेकिन एक की कृपा, तुम्हारे काम क्रोध लोभ के कारण आपके मन की कृपा नहीं हुई तो सब कार्य आ रहे, सब नष्ट हो गया. That is right. जी. Now next question, page 145. Offer yourself heart and soul to God and let him to do with you as he pleases. Please explain the sentence particularly as he pleases. क्या है?
वो भगवान के ऊपर शरणागत करो, प्रभु तुम जैसा कराओ वैसा करूंगा मैं, अच्छा है ना। यथा हाँ नियोक्तोस्मि तथा करोमि, ये गीता में है बात हुई थी जी कि भगवान ने कहा कि तुम मैं ये करना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तो भगवान ने डांट लगा के कहा कि मैं जैसा कराऊंगा वैसा करना। अर्जुन उसके बाद मान गया, यथा नियुक्तोस्मि भवो, तुम आप जैसा कहोगे मैं ऐसा करूंगा, आप युद्ध करने को कहोगे तो मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आप मुझे नया मार्गदर्शन दीजिए कि मैं किस प्रकार से करूं। कौन सा क्वेश्चन है, नंबर क्या है ये? हमारे जी ये 11 नंबर है। Do what he pleases, यस make you offer yourself heart and soul to God and let him do with you as he pleases. Now here my question is, what is the meaning of वो तो he सरेंडर pleases? की बात है। यानी वो तो इतने इसको क्या है? शरणागति, वो उन्होंने ये तो क्या है कि बोल दिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जी ये डिफिकल्ट पूर्ण शरणागति बिना इच्छा डिजायर्स को नष्ट हुए शरणागति नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल। जी क्या करेंगे? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 146. हाँ Mere repetition without remembrance will not be of any use. Please explain how to do both the things simultaneously. बिना क्या कहा है? बिना Mere repetition without remembrance. Question number 12, page 146. पहली लाइन है ऊपर की। यानी भगवान का नाम तो ले रहे हैं मन ही मन, हाँ और मन से भाग रहा है। मेयर रिपीटेशन, वो तो सभी लोग यही तो करते हैं बाबा। भगवान का एक बार नाम लो, पूरा मन पूरा उसमें लग जाना चाहिए। मैं जानता हूँ, यहाँ पे सुनी मैंने संतों की बात कि यहाँ से विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते लेते। हाँ उनका बीच में है कि जाते हुए स्मरण करते हुए जाएंगे, और रास्ते में मन जो है इधर उधर भटक गया, तो कह रहे कहाँ से भटका? वो गदोलिया से भटक गया, तो वापस आ गए गदोलिया, और फिर चालू किया उन्होंने जाना। यानी मन जब तो करते हैं और मन इधर उधर भागता रहता है, ये तो है ना, स्वाभाविक है। तो हाँ ये स्वाभाविक है। तो अस्वाभाविक करना पड़ेगा ना, बिना उसके थोड़ी कुछ होगा। एक बार जब करो, कृष्ण का नाम लो, तो कृष्ण का रूप भी इमीडिएटली आना चाहिए एक बार में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया तो वासुदेव का रूप आना चाहिए मन में, प्रत्येक बार आना चाहिए, और नहीं तो वापस करो। हाँ 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 राइट। हाँ अगर 108 इस प्रकार का 108 कर सको तो क्या कैसा प्रबल होगा, जरा सोचो तो। जी और उसके बदले आप 1008 करो और उसमें मन इधर भागता रहे तो क्या होगा? यस बराबर जी महाराज जी। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, the same page 146. The guru must select the disciple and the disciple must choose the guru. Maharaj ji, is it a commodity available in the market or in a mall where both can select each other? How sadhak should select or found qualities in guru? What knowledge he has? क्या क्या कहा है महाराज जी? ये इनने स्वामी जी ने लिखा है, द गुरु मस्ट सिलेक्ट द डिसाइपल and the disciple must choose the guru. Now my question is, it is not a commodity available in the market or in a mall yes where both can select each other. हम एक दूसरे कैसे select करें? Nowadays guru is a commodity in the market, isn't it? दिलीप भाई, आप इंटरनेट खोल के देख लो ना, कितने गुरु मिल जाएंगे। महाराज जी, वी आर नॉट वो आपका, अरे हरे हरे कृष्ण है, और कौन कौन सा है, इतने सारे है और सब है मिल जाएंगे, इतने इंटरनेट्स हैं। तो गुरु हैज बिकम नाउ ए कमोडिटी। यस, सो मेनी गुरुज, गो टू इंटरनेट, रीड। और नहीं तो पढ़ो कौन सा गुरु कैसे लाना है, विवेक चूड़ामणि पढ़ो, उसमें सारे गुरु के लक्षण दिए गए हैं। वो पूरा अच्छी तरह गुरु के लक्षण देखो, और उसके बाद में देखो क्या। नहीं महाराज जी, पर हाउ टू फाउंड आउट द क्वालिटीज इन गुरु, ये कैसे? हम इससे बड़ा हमारा शरीर का कोई बेवकूफ आदमी नहीं होगा जो गुरु की क्वालिटी ढूंढे गुरु में।
देखो ये विवेक संज्ञान समझ में नहीं आ रहा। विवेक चूड़ामणि पढ़ो, उसमें पूरे गुरु के लक्षण बता दिए गए। नहीं वो बराबर है, हाँ, लेकिन तो अगर मेरा या सवाल पूछा ये जाए- है कि मैं हाँ। गुरु ढूंढने जाऊं तो पहले उसको कहूं मैं तेरी क्वालिटी देख रहा हूँ, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? हाँ, तुम ही हो गए, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अगर सच पूछा जाए तो जो अभी बोलते हैं ना कि अगर टाइम होता है तो गुरु अपने आप आ जाते हैं, हाँ और शिष्य को जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को अपने आप पता चल जाता है, और गुरु भी पता चल जाता है कि ये मेरा शिष्य है। कोई प्रश्न नहीं उठता है ढूंढने की बात। अरे तीन चीज बताया गया है ना, अकमहतो, शास्त्रोज्ञो एंड अपरिग्रह, बस तीन चीज देखने का है महाराज जी। नहीं, आप देखिए, आप जितने भी हैं तो विवेक चूड़ामणि में तो 100 चीज दी गई। जी एक चूड़ामणि में बताया, तीन चीज के बताया, शास्त्रोज्ञो, अकमहतो एंड अपरिग्रह, मतलब कोई भी चीज। आप खोजिएगा। चलो, हो गया दिलीप भाई? राइट महाराज, यहाँ प्रणाम महाराज। अच्छा अच्छा, कुंडो। महाराज प्रणाम महाराज। हाँ भाई। महाराज पेज 132 इसमें है, ए वाइज गुरु विल अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गॉड दैट कॉल्स फोर्थ द ग्रेटेस्ट फेथ फ्रॉम द डिसाइपल, बट अपना जो दिस इज नॉट हाउ वी आर इंस्ट्रक्टेड अबाउट द चोजन deity. In our case, we are attracted by the teachings of Sri Ramakrishna, but about initiation, we didn't have any choice about the Guru. So, what is the difference? And my second question is Sri Ramakrishna our Guru or Ishta? देखो, second question I can answer, no difficulty. Sri Ramakrishna is Guru as well as Ishta. ये कैसे हुआ महाराज बताइए। तो हमने जब दीक्षा हो रही थी, हमने मना कर दिया, उन्होंने कहा रामकृष्ण को मानते, हमने कहा नहीं मानते, उन्होंने कहा दीक्षा मत लो। तो फिर अच्छा। हमको सत्यरूपानंद जी समझाया कि अगर तुम श्री राम, वो क्या है, जब दीक्षा देते हैं तब वो जानते हैं कि मैं नहीं दे रहा हूँ दीक्षा, श्री रामकृष्ण दे रहे हैं। वो गुरु जो है रामकृष्ण मिशन के, आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने को रामकृष्ण से। तो अगर श्री रामकृष्ण को आप गुरु नहीं मानोगे तो वे दीक्षा नहीं दे सकेंगे। मैं नहीं हूँ गुरु तुम्हारा, फिजिकली गुरु ये रामकृष्ण है, वो मेरे माध्यम से दीक्षा दे रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद में मंत्र जाप कुछ किसी का भी हो सकता है, काली का मंत्र हो सकता है, शिव का मंत्र हो सकता है, इष्ट तुम्हारे कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु हुए श्री रामकृष्ण। और अच्छा। आजकल जो है रामकृष्ण मिशन में गुरु तो है जो दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण को भी इष्ट के रूप में दिया जा रहा है। अच्छा तो श्री रामकृष्ण इष्ट भी हो गए, गुरु भी हो गए। महाराज, और दूसरा जो बोलते हैं कि संघ जो है ये श्री रामकृष्ण की रूप है और यही गुरु मतलब वही समझ लो, तो इसका क्या मतलब है? श्री रामकृष्ण इज द बॉडी ऑफ श्री संघ इज द बॉडी। रामकृष्ण संघ। जो सारा संसार जो है वो भगवान का ही रूप है। तो हाँ हाँ, जब उस दृष्टि से अगर सारा संसार भगवान का रूप, भगवान ही है, तो एक संघ का होने से क्या क्यों नहीं होगा? श्री रामकृष्ण का कॉस्मिक रूप यदि होगा तो श्री रामकृष्ण तो कॉस्मिक में वो सारा ब्रह्मांड है और श्री रामकृष्ण है। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कहते हैं ना, कालात्मक परमेश्वर राम, राम के लिए है ना। हाँ, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, भजन राम नाम संकीर्तन में है। तो राम को फिर वहां सिर्फ शरीरधारी राम नहीं बताया है, वैसे ही श्री रामकृष्ण जो है पर ब्रह्म, पर शक्ति, पर रूप राम कृष्ण। तो श्री रामकृष्ण जो है वो पर ब्रह्म है। तो पर ब्रह्म ही क्या, वो तो सारा जगत के रूप है। वो शरीर राम जो अपने रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण संघ है, यानी रामकृष्ण संघ जो है वो श्री रामकृष्ण तो छोटा हो गया। अच्छा। हाँ, वो तो सारा ब्रह्म है, सारा पृथ्वी वो श्री रामकृष्णमय है। अच्छा महाराज। पूरा देख लो, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो, ठीक है। हाँ महाराज, मतलब अभी जो क्वेश्चन है भी हो गया। हाँ, पहला वाला भी हो गया कि अभी जो है राम कोई इष्ट बोल के दे रहे हैं, उसमें मतलब आ गया। और गुरु जो है हमारा वो मतलब गुरु है भी नहीं भी है, मतलब रामकृष्ण ही हमारा यानी फिजिकली एक गुरु के माध्यम से मंत्र आया, लेकिन एक्चुअली इट हैज कम फ्रॉम श्री राम। यस महाराज।
अच्छा महाराज, second question महाराज, by realization normally we mean some ultimate transcendental experience like samadhi, but in page 134 Maharaj is speaking about some realization. Now what sort of realization are these? There are, आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, वो जो विभूति पाद में पढ़ो, कितने प्रकार के रियलाइजेशन बताए हैं। केवल समाधि और साक्षात्कार वही नहीं है। अच्छा, अब डीप कंटिन्यूअस मेडिटेशन हो रहा है, फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में चल रहे हो तो लग रहा है कि ठाकुर मेरे साथ में है, हमारे ईस्ट मेरे पास साथ में है, मन एकदम शांत रहता है और मेडिटेशन डीप होता है। ये दीज आर लोअर टाइप ऑफ रियलाइजेशन। उस टाइम में अगर मान लो जैसे कुछ दीपक जैसे दिखता है, वो भी है महाराज? वो कोई होगा दीपक, पतंजलि योग सूत्र में तो लाइट का दर्शन बताते हैं। अच्छा महाराज। हाँ, कोई बोलते हैं कि सिर के पीछे ज्योति का दर्शन होता है, कोई बोलते हैं कि यहाँ पे होता है, सिर के ऊपर होता है। ये पता नहीं कितने कितने हैं इस प्रकार। तो वो भी रियलाइजेशन माना जाएगा, है ना? यदि ये होवे दैट इंडिकेट दैट इट इज गुड, दैट इज ओनली। यही बात कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। हाँ, इसमें भी वही बोला है, सम रियलाइजेशन। ठीक महाराज। सेकंड लास्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 140. The one thing needed is faith in the Guru. Then in the next page it is said that, but how can who has not realized God free a soul? If one has absolute faith in the Guru, can he gain liberation even if the Guru is not a realized soul? हाँ, अगर गुरु में खूब श्रद्धा हो तो क्या होगा? जो गुरु कहेगा वैसे करो, कहता है ना। हाँ। एक शिष्य जाके बोलता है, अच्छा मैं कैसे ध्यान करूं, मैं तो ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो ने कहा कि तुम किसको प्यार करते हो? तो कि मेरे तो ऐसा वो है, बैल है, बैल को सांड बैल है, उसको मैं प्यार करता हूँ। तो कि बैल में भगवान को देखो, बैल को पूजा करो अपने इष्ट के रूप में, उसी से हो जाएगा। तो लोअर लेवल पे ऑर्डिनरी गुरु इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और ऑर्डिनरी शिष्य से भी उनको लाभ हो जाता है, और सभी के लिए उच्चतम सिद्ध गुरु की आवश्यकता नहीं है। That is why he said the one thing needed is faith in the Guru. मतलब इसमें faith को प्राथमिकता दिया गया। साक्षात्कार वाला गुरु कहाँ मिलेगा भाई? हाँ महाराज। हाँ, यस महाराज। हो गया? प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। सतीश आ जाओ। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अच्छा मैं थोड़ा चाय पी लूं, आज बहुत भाई थोड़ा हो गया। अच्छा हाँ जी, पी लो महाराज, पी लो। हाँ बोलो सतीश, बोलो। जी जी महाराज। गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिटेशन, महाराज से डू silent for a couple of minutes, make the disturbance हो रही है, क्लियर नहीं आ रहा है सतीश। जी जी एक मिनट जी, अब आवाज आ रही है महाराज? हाँ बोलो तो। महाराज जी ने कहा ना, बिफोर beginning your meditation, do not begin it immediately, sit silent for a couple of minutes to make the mind blank. Maharaj, how is it, how to make the mind blank? अभी मैंने डिस्कस किया तो एक जो तो आते जाते हैं। नहीं देखो करो ना, ऐसा है वो डिस्ट्रक्ट से पहले आपको शरीर बिना हिले डुले बैठो, बिना हिले डुले 15-20 मिनट तक बैठो, शरीर को बिल्कुल क्वाइट कर लो, शरीर को देखते रहो, उसके बाद अपने माइंड को देखो। यू हैव नॉट टू वरी अबाउट माइंड में विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जस्ट बी ए विटनेस ऑफ द माइंड। जी ये ओनली देखो, डोंट मेडिटेट, डोंट थिंक दैट आई हैव टू मेडिटेट, नथिंग, नो आइडियाज, अलाउ, जस्ट सी द माइंड।
जी जी then जी you will महाराज। find that the mind becomes quiet. Not easy, but it is possible. फिर भी It is not easy, but it is possible. Try to do it. जी जी Huh? इट इज नॉट इजी, इट इज पॉसिबल। तो सबकॉन्शियस माइंड में फिर भी विचार जो है चलते रहते हैं। Don't worry जैसे about दो माइंड subconscious है mind. हमारे। Only remember, we are only working about conscious mind. Don't worry about subconscious mind. Absolutely don't worry about subconscious mind. जी सारी जी साधना कॉन्शियस माइंड के ऊपर होती है। जी So just observe your जैसे ना mind. That's all. Maharaj, if दो before माइंड है हमारे। hello, हाँ Maharaj, before meditation, if we read a small paragraph from a good book, that also helps the mind to concentrate. yes, that is all right. वो तो नहीं पॉइंट इज कि वो उनका ये कहना है कि माइंड को क्वाइट, कहना है कि ब्लैंक कर लो माइंड को। इसमें लिखा है ना, इस आर्टिकल में इस पे प्रश्न उठ रहा है। तो वो तो बाहर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन के बिना तो हो नहीं सकता ये। यस, ऐसा लगता है जैसे दो माइंड है, एक तो मेडिटेशन कर रहा है लेकिन दूसरा माइंड भी अपने में वो बातचीत नहीं मेडिटेशन के बाद में बात आएगी। ब्लैंक करना ही पहले, बिफोर मेडिटेशन यू हैव टू मेक द माइंड ब्लैंक। और वो होगा विटनेस बन के, साक्षी बनकर, मन को देखने से होगा। राइट। क्वेश्चन में पूछा हुआ है उन्होंने, द गुरु मस्ट सेलेक्ट द डिसाइपल एंड द डिसाइपल मस्ट सेलेक्ट द गुरु। महाराज, हाउ कैन अ डिसाइपल सेलेक्ट द गुरु? डिसाइपल डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू चूज द गुरु। उनके पास इतनी कैपेसिटी कहाँ होती है? जैसे कि हमने जब नाम दान लिया तो हमें कुछ मैंने सवाल पूछ लिया ये तो क्या करेंगे? वो तो हो गया। अनफॉर्चुनेट है कि वो क्या करोगे। Is often disciples get deceived by false gurus. One has to be very careful. जी महाराज। Last question, Maharaj. You can't give up the Lord unless you possess the higher taste. Maharaj, it means one does not have to struggle for renunciation. It comes automatically. But the question is, when we will taste the bliss, so that we may give up the hog plum of earthly life. ऐसा है कि try to cultivate higher taste as a part of sadhana. यानी don't wait for the experience to come. जी अपने सुनो, अपने कल्टिवेट हायर टेस्ट। वर्ल्डली टेस्ट है, वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स का अट्रैक्शन है, उनको धीरे धीरे कम करो जितना हो सके। That is the only way you can do it. Is that okay? तब तक छूटता नहीं जब तक अब क्या करोगे? साधना करते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, सुधीर मजूमदार हो गया क्या? नहीं हुआ, कब हुआ? नहीं हुआ महाराज। आ जाओ भाई। Should I ask महाराज जी? हाँ चलो स्टार्ट करो। मेरा एक डाउट रह गया दिलीप के में, और रादर क्लैरिफिकेशन। आप कह रहे थे कि जब चंचल माइंड होता है, लोग जैसे कथामृत में लिखा हुआ है, वो ज्यादा बाहरी चीजों में इंटरेस्ट होता है, और जब तक कि इंटरेस्ट ठाकुर की तरफ नहीं जाता तब तक माँ खुद दौड़ नहीं आती। तो इसी प्रकार एक डिवोटी अगर वो सेरेमोनियल वर्शिप में लगा रहे, इट इज ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग विद टॉयज, क्योंकि उसको फिर हायर लेवल पे वो गया नहीं है, तो उसको उसी दैट इज ट्रू। प्रिलिमिनरी प्रथमा प्रतिमा पूजा, सेरेमोनियल प्रथमा प्रतिमा जो पूजा, जपस्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा यानी मेडिटेशन, और स्वयं पूजा यानी मैं ब्रह्म हो गया, वो तो उच्चतम पूजा। तो जब सेरेमोनियल्स में लगे हुए हैं तो प्रतिमा पूजा पर लगे हुए हैं बस।
एक वो भी उसी तरह हो जाता है, he does not progress higher. हाँ, वो तो अब प्रोग्रेस होने पर ध्यान जब पे आएगा वो, हाँ, तब तक माँ दौड़ माँ खेलने देती है, क्या करें करते रहो, मतलब वो यही है। ठीक। हाँ। My first question, Maharaj ji, from page 143 to 145, जो हमने स्वामी ब्रह्मानंद पूछ रहे हैं, advantages of starting, but how can we speed up our spiritual evolution having already lost time by starting when we are past young age? Yes, yes. Now don't worry about क्या करोगे तुम. हाँ, तो how can we now begin from now? Begin from now. Just as young, at the age of young, you would have started. Begin from that. Some saints have said that when you begin from now, it is like beginning from before the birth of the next life. Yes. When you will be next born, तो उसके पहले से तो आपने सादा प्रारंभ कर दी. It is not like, don't think that it is old age. You start from now itself. Consider that we are still young, and yes, we have, yes. That is the idea. Full intensity from young, उतना ही जोर लगा के, ठीक है. हाँ. And only thing is that you will have to struggle more. The mind will become restless more. Body will not be just work. So what to do? Whatever it is situation, you begin with that. You should fight. Put the same effort. Yes, yes. And effect will be less due to age, but so far as you are concerned, you put your as much as possible in effort. Of course, you have to see that you don't fall ill. All those things are now factors. Right. Second question, Maharaj. Swami Brahman, monastic disciple, to delve in metaphysical problems, but to do only sadhana. Now we often discuss metaphysical issues. We assume to be, analytical and part of Gyan Yoga. Can't we delve in metaphysical issues? हम लोग तो philosophy discuss करते हैं, analytical भी होते हैं. तो ये हमारी ठीक करो, माइक ठीक करो. नहीं आया. नहीं आ रहा. तुम्हारा माइक ठीक करो. Come closer to the mic. Can you hear me, Maharaj ji? Now, Yeah. now Yes, yes. कट जा रहा है, कट जा रहा है. कट के आ रहा है. So there is a disturbance. Maharaj ji, question was metaphysical issue लोग डिस्कस करते हैं या एनालाइज करते हैं पार्ट ऑफ ज्ञान योगा, जबकि स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं कि मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स में ज्यादा मत जाओ, साधना करो. आपका क्या कहना है महाराज? ऐसा है कि ज्ञान योग में भी विचार करने के बाद एक कंक्लूजन पहुंचते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा हूँ. ये विचार मेटाफिजिकल डिस्कशन, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करके होता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह क्या है, पंचभूत से बनी हुई है, आत्मा भिन्न है. ये हुआ, इसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, मैं आत्मा और मैं और ब्रह्म एक है. Once you reach the conclusion, you don't need to go to metaphysical pieces. Unfortunately, फिर हम फिजिकल लेवल पे आ जाते हैं, इसलिए फिर बार बार हमको विचार करना पड़ता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ. ये पंचभौतिक है. Otherwise, it's not at all necessary. If you can do it without it, very good. Okay. But since our mind is restless, then what will happen? We won't discuss this and we'll discuss the worldly things. कि मोदी के बदले और दूसरा होना चाहिए था, ये पार्टी ठीक नहीं है. We will go on discussing these things rather than metaphysical things. हाँ, लेकिन मेरा सवाल था कि मेटाफिजिकल डिस्कशंस आप करते भी हैं अभी, तो अगर ज्यादा करेंगे तो वो मेंटल जिम्नास्टिक्स वाली बात आ जाएगी जो Exactly, I fully 100% agree. हाँ. It is 100% agree. It is not at all necessary. जी. Okay. तीन में है
He says, do not give advice to others. Now, what does he mean by this? Just a minute. सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो 16 पेज में है कि डू नॉट एडवाइस टू अदर्स। हाँ, दो ये ब्रह्मेशानंद को छोड़ दो एडवाइस देना। वो वंस ए वीक वन प्रवचन देते हैं, तब उसका हम करते हैं, तो उसके बाद में कुछ करते नहीं। तो हम ये भी नहीं करेंगे तो हमको खाने को नहीं देगा कोई भी। इसलिए अदरवाइज इफ देयर इज गिविंग एडवाइस टू अदर्स इज एब्सोल्युटली अ डाइवर्शन। अच्छा, हाँ, ऐसे ऑफ कोर्स एक बच्चा है तो वो बुरा काम कर रहा है तो उसको रोकोगे, एग्री करोगे, दैट्स ऑल राइट। वैसे तुम्हारी जो रिस्पांसिबिलिटी है संसार में हो, यू आर ए केयर टेकर ऑफ ए फैमिली, so you have to give advice to some people, that is all right. हाँ, मेरे ख्याल में वो ये शायद कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल एडवाइस देने की कोशिश ना करो किसी So को। मत करो, don't करो। Qualified to do that, probably. Yes, you are not qualified. ठीक है। और पेज 322 में है लास्ट पैराग्राफ, इफ यू एट एनी पर्टिकुलर हाउस, फ्रैक्शन ऑफ मेरिट विल गो टू देम। तो मेरा सवाल है, डज दिस अप्लाई टू अस आल्सो who are not doing madhukari but invited for a meal at someone's house? तो ये हमारे पे ऊपर एप्लीकेबल। ये ऐसा है कि in family you are always living dependent, not only food, you are dependent upon so many people, and whatever merit is there they will be shared by them also. So अगर तो आपने madhukari, क्योंकि सन्यासी और apart from madhukari is not dependent upon anything for anything else, right? That is why it is told. But so far as grihasthas are concerned, grihasthas तो fully dependent upon society है। जी। So अगर a servant has done job, you have to pay him money. जी। Whatever someone has helped you, so you got friends have helped you, you cannot pay them in money, but you have to pay them in goodwill. अपना merit तो उनके पास जाएगा। So in society it is give and take in some form or other has to be there. तो हम अगर घर में जाके मान लीजिए डिनर लेते हैं तो वहां पेमेंट का तो सवाल नहीं आता है, कोई डिपेंडेंसी आता है, बट मेरिट का सवाल तो आ जाता है महाराज। हाँ, तो मेरिट उसको तो मिलेगी, बहुत मेरिट मिलेगी। So we should then do more of japa. Japa. But the the effects. Pray for him. Acha. Okay. Pray for the host. That's all, Maharaj ji. Pranam, Maharaj. Nivedita. जी महाराज। महाराज पहला प्रश्न है, those who are real भक्त, क्या हुआ? वेट ये पहले का है। हाँ, पहला प्रश्न है, is there any difference of sadhana between a monastic disciple and an earnest grihi disciple? अरे, interest this spiritually now there is a world of difference. Mental makeup training is both of them is very different. From yes, the childhood you have been trained and the sanskaras have produced. The subconscious mind of a sadhak, of a sadhu, and subconscious mind of a householder, there is a great difference. That's what mental makeup training is both different. Effect of see with that, when I do a meditation, my quality is dependent upon my subconscious mind. Apparently
appear to be the same. तो ध्यान में बैठे हैं तो अपने एक वर्कशॉप हुई तो सन्यासी भी ध्यान कर रहे हैं, गृहस्थ भी ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटे तक दोनों ने ध्यान किया. Apparently appears that they are doing the same Ishtit mantra. वो, लेकिन there is a difference. But the depth attained in the meditation also is different in both the cases. An artist you more exposed. And their progress is also absolutely different. Oh, so many things are, factors are so many factors. Whole lifestyle is Yeah. different. Lifestyle Different. mind. यानी वो तो एक ही गुरु से गृहस्थ ने भी मंत्र लिया है, सन्यासी ने भी मंत्र लिया है. Apparently appears that the गुरु ने मंत्र तो वही दिया है, साधना पद्धति भी वही बताई है. Correct. But there is a difference. Second प्रश्न है. Wait. दूसरा प्रश्न, व्हाट इज मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन, ये बता रहे ना. तो बताया ना, ब्रह्मानंद जी आत्मा क्या है? इन आत्मा, पंचकोश, जीवात्मा, 3 शरीर. तो ये तो हम ज्ञान योग में पढ़ते हैं महाराज. स्वामी जी के सारे लेक्चर ज्ञान योग के उस पर है ना. नहीं तो वो तो उसको मैंने अभी डिस्कस किया ना. द पर्पस इज उसके बाद में टू कम टू ए कंक्लूजन. ये जो हमारा शरीर है ये पंचकोश से बना हुआ है. इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है. ये जीवात्मा से भिन्न है, और जो भिन्न प्योर जीवात्मा है वो परमात्मा है. ये पंचकोश है. ये सब जो है ये विचार करके कंक्लूजन लाना, ये है मेटाफिजिकल थिंकिंग. तो फॉर इन द बिगिनिंग फॉर द ज्ञान योगी क्या है, उसको जानना है कि मैं आत्मा और ब्रह्म परमात्मा एक है. तो कैसे हूँ? मैं तो शरीर हूँ. मैं तो आत्मा कैसे हो सकता? मैं शरीर, मैं ब्रह्मा के साथ एक कैसे होता हूँ? अहम ब्रह्मास्मि तो हो ही नहीं सकता. इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा. देखो हम समझाते हैं कि अहम का अर्थ क्या है. अहम का अर्थ ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं है, विचार करके बताते हैं. इसलिए ज्ञान में मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन अल्टीमेट निष्कर्ष निकालने पे है. उसके बाद में क्या होता है, निष्कर्ष तो समझ में एक दिन समझ में आ गया, पर फिर भी दूसरे दिन तो मैं खाना खाता हुआ बोलता हूँ कि मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है. तो फिर मैं आई कम टू द सेम लेवल. इसलिए बार बार करना पड़ता है. करेक्ट. तीसरा प्रश्न है, व्हाई माधुकरी इज प्योर, ये कारण क्या है? बिकॉज माधुकरी एक एक के घर में जो भिक्षा सन्यासी लेते हैं, व्हाई इट इज प्योर? माधुकरी का अर्थ यह है जैसे भौरा है, मधुकर है. तो वो क्या है कि एक कितने सारे अलग अलग फ्लावर से एक एक ड्रॉप लेता है. एक फ्लावर से पूरा नहीं लेता. तो उसने थोड़ा थोड़ा सबसे थोड़ा थोड़ा लिया है, किसी के ऊपर ज्यादा बोझा नहीं गया. इसलिए जो साधु भिक्षा मांगता है तो एक कमरे मकान पे गया, तो मकान में साधु ने देखा अगर साधु आया तो 3 रोटी दे दी, सब्जी दे दी, दाल दे दी. साधु कहेगा नहीं बाबा नहीं, ये मत दो मेरे को केवल 1 रोटी दो बस. और दूसरे घर पे जाएगा, वो कहेगा तुम 1 रोटी दो. तीसरे पे जाएगा, कहते हैं थोड़ी सी सब्जी दे दो. चौथे पे कहेगा थोड़ी सी दाल दे दो. तो एक घर से 4 1 घंटे पूरा खाना मिलता था, उसके बदले वो 4 घर से 5 घर से लेता है. किसी भी घर के ऊपर बोझा नहीं पड़ता ना, किसी को भी लोड नहीं. पर महाराज वो जो भिक्षा दे रहे उनके सब संस्कार आ जाते हैं क्या इसमें? ना वो तो आता है ना. संस्कार नहीं, संस्कार भी आ सकते हैं, और बोझा उनको इकोनॉमिक डिफिकल्टी भी आ सकती है ना, ज्यादा ले लिया तो. अच्छा. हमारे तो बहुत स्ट्रिक्ट, यानी भिक्षा मांगने के बहुत स्ट्रिक्ट डिटेल रूल्स हैं भाई. यहाँ तो केवल आप नाम देख रहे हैं, लेकिन जरा. अच्छा, तीसरा प्रश्न, उसके बाद का प्रश्न है, इफ वी
जी महाराज। हाँ बोलो। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर किसी आदमी को देखा, वो ये एक माँ आई भिक्षा देने वाली, वो मन उसका उदास देखा, आंसू आंसू आवे तो नहीं लेना, क्योंकि उनके घर में कोई दिक्कत होगी, दुखी होगी, उसका नहीं लेना। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। ये तो जैनिज्म में तो बहुत ज्यादा है महाराज जी। हाँ, जैनिज्म में, साधु हिंदुइज्म में भी है। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज इसके बाद का प्रश्न है कि इफ 2/3 ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एंड 1/3 ऑफ जपा एंड मेडिटेशन इज डन, कैन इट गिव ए गुड रिजल्ट? तो क्या कर दिया तुमने, क्या करा? मतलब सारा दिन भर ठाकुर माँ का, सारा दिन भर जब ठाकुर माँ का चिंतन करते रहे, मतलब इन बिटवीन, रेगुलर पूरा तो कंटिन्यूस होगा नहीं, फिर एंड 1/3 ऑफ टाइम वी स्पेंड इन जपा एंड मेडिटेशन। महाराज ने ठीक उल्टा कहा है ना, तो इज इट कैन गिव गुड रिजल्ट टू अस? अरे बाबा, तुमने तो जप और मेडिटेशन और ठाकुर का चिंतन दोनों को अलग कर दिया। दे आर सेम। हाँ हाँ हाँ, नहीं बैठ के मेडिटेशन करना और चलते फिरते करने में बहुत डिफरेंस होता है ना महाराज। नहीं, मैं वो जो चलते फिरते करो तो जब भी करो, चीज तो वो की वही हो ना। अबे सब तुम 4 घंटे तो बैठ नहीं सकोगे। 1 घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, उसके बाद बाकी चलते फिरते ध्यान करो। लेकिन उसमें डिफरेंस बिटवीन जप एंड मेड, उसमें क्यों होगा डिफरेंस? नहीं, जब भी करो, चलते फिरते भी जब हो सकता है, मन की एकाग्रता पर निर्भर करता है। चलते फिरते भगवत चिंतन हो सकता है, दैट बिकम्स मेडिटेशन। ठीक है, हाँ यही पूछ रही। ओके, अच्छा ये एक प्रश्न उन्होंने बताया ना कि यू विल गेट इनफ टाइम टू स्लीप लेटर ऑन, एक साधक को बोल रहे हैं ना, साधना इज द होल टाइम स्ट्रगल है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? पेज नंबर 320 में 320 क्या बोल रहे हैं? साधना इज अ होल टाइम जॉब। अब नहीं, वो तो मैं बोल रही हूँ, मतलब महाराज कह रहे हैं डोंट स्लीप नाउ, यू हैव टू स्ट्रगल मोर, यू विल गेट इनफ टाइम टू स्लीप लेटर ऑन। वो जब जवानी की उम्र में है, वो ज्यादा सो रहा होगा तो उसको बोला होगा उसने, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? मतलब बुढ़ापे में सो सकते हैं। हाँ, अच्छा लास्ट और एक प्रश्न है, फिफ्थ, व्हेन वन कैन गेट रियलाइज गुरु एंड कम अंडर हिज गाइडेंस, need not have anxiety about their spiritual progress, how far it is true? पेज नंबर 141। हाँ पेज नंबर 141 तो जी, तो उसके आगे पढ़ो, जहाँ पूछा उसके आगे पढ़ो। if they meet any trouble or make any mistake, God will protect them and show them right course. Please comment. ऐसा है, यानी God will have to show path continuously just as give, ये उनके एश्योरेंस करते हुए कहते हैं। अगर तुम स्ट्रगल करते रहो, बार बार यतीश्वरानंद जी बोलते हैं स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, बैठने की बात नहीं है। अगर तुम कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते रहोगे तो भगवान तुमको मदद करते रहेंगे। उसमें तुम्हारा यहाँ प्रश्न का ऐसा लगा कि तुमको ये लग रहा है कि भाई बुढ़ापा हो गया है, कितना करना है, तो बैठे रहने से ही हो नहीं नहीं, ऐसा नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। वी आर ट्राइंग, बट हमारी तरफ से उतना थोड़ी कोशिश हो रहा है, ऐसा लगता है हमको हमेशा। जो भी हो, दैट्स गुड गुड। चलो छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन भी है ना एक। अच्छा, अब लास्ट प्रश्न है, ड्यूरिंग मेडिटेशन मानसिक पूजा ऑफ गुरु एंड इष्ट आर मैंडेटरी और नॉट? इन द बिगिनिंग डू इट ब्रीफली। हाँ अच्छा, मानसिक पूजा शुरू में करने हैं, उसके बाद में यू गो टू मेडिटेशन। हाँ, एक बार मैं आपको पूछा था, पहले मैं करती थी ना, तो आप बोल रहे थे कि ये इतना सब क्या करने का, गो डायरेक्ट। तो इट इज बेटर टू थिंक अबाउट द आत्मा एंड परमात्मा रादर देन मानसिक। वो ऐसा है ना कि शुरू में हमारी हैबिट नहीं होती, इसलिए भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं कि मानसिक पूजा करो, कम से कम नहीं तो बैठेंगे, मानसिक पूजा भी नहीं करेंगे और जब इधर उधर भागता रहेगा। यस करेक्ट। महाराज जी बस महाराज
महाराज हो जी गया मेरा प्रश्न। प्रणाम। हाँ भाई, हाँ महाराज जी, छोटा मैं ये पूछ रहा था कि ईश्वर का ध्यान 24 घंटे लगाए रखना और मानसिक पूजा में फर्क क्या रहेगा? कोई एक ही चीज है, एक ही चीज है। जी, राइट। मानसिक पूजा यानी देखो दिलीप भाई, जी जी मानसिक पूजा का अर्थ है बैठ के कल्पना करना है कि बाहर सामने हमारे भगवान बैठे हुए हैं, इष्ट देव। हमने हाँ। पूजा किया, मैंने मन ही मन अगरबत्ती चला दी, हाँ, ठीक, फूल मैंने पत्थर जब सब दे चढ़ा रहे हैं। दिया, इसको बोलते हैं मानसिक। ओके, राइट। और स्मरण तो दूसरी चीज हो गई थोड़ी सी। स्मरण तो दूसरी है। अच्छा, आप कौन? रीता है ना? हाँ है। रीता का क्वेश्चन है ना? हाँ। Yes, Pranam Swami ji. अच्छा अच्छा, आइए आइए। My first question, part हाँ। 1, chapter 1, page 134, second para. Here Raja Maharaj says that before starting to meditate, to sit silently for a few minutes and to try to make the mind blank so that no aligned thoughts may cross it. What does making mind blank mean? Thoughts अच्छा, हाँ are all the time coming and going. What is ना, the ऐसे process? you say, अभी मैंने बताया, when you sit for meditation, first important thing is that body must be absolutely motionless, quiet, sitting straight, not moving. After that, you observe your mind. You be a witness of the mind. Yes, Swamiji. Don't try to think anything. Just see what is going on in the mind. Oh, don't try What will happen? Automatically, you are not thinking consciously. You just look at the mind. Automatically, the mind will become quiet. Okay? Yes, Swamiji. I have understood now. Then that answers my second question also. What should be there in the mind? This question is fully answered, Swamiji. Then second question, part 1, chapter 2, page 136. What is real Vairagya? How does real Vairagya come to a spiritual seeker? You see, Vairagya, you know, my book Anand Ki Khoj. Yes, I have उसमें read. I have detailed explained Vairagya. Yes. You know, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, पतंजल योग सूत्र में कहा है, दृष्टानुष्ठविक विषय विचित्र वशीकार संज्ञा वैराग्य, वशीकार वैराग्य है, साधक वैराग्य है, fully established वैराग्य है. So drisht यानी something which I've seen, and those which we remember, all these attached desires has to be given up. And once you've given up and you feel a vashikar, confident, Arey, nothing can disturb me. That is called Vairagya. So Vairagya is not, you can just discuss this way. Vairagya is no desirelessness. That is the Vairagya. Total And desirelessness. you can read my article in Anand Ki Khoj. You got Anand Ki Khoj? Yes, yes. Both in Oriya, Hindi and English. Vairagya पढ़ लेना article. Next time we will ask you your answer to your question from that. Okay? Okay, Swami. Thank you. Then third question. Part 3, chapter 1, page 317. Raja Maharaj answers the question of a monastic disciple. Here he says that one should examine the thoughts that arise during meditation. What is the meaning? How to examine such thoughts that arise during meditation? Just now we are told when you sit for meditation and look at your mind, you will come to know what are the thoughts arising in your mind. So your thought is coming for the cooking, what has to be cooked. Yes. Or someone you had met. So one is this. And second is when you start meditation, some disturbing thoughts will come. Yes. So find out what those thoughts are there. Then now, what to do?
By that you will be able to know what is the construction of your mind. Oh, but Okay. what to do after you know No, that? that is, you come to know. Hmm. Oh, this is my attachments. Yes. And by vichar, you have to get over those attachments. Yes, Swamiji. Yes. Thank you, Yes, Swamiji. Okay. अब कोई बचा है? कोई नहीं बचा? मेरा तो काम खत्म हो गया. अभी और मेरा कुछ लोग बचा है. हैं? मेरे questions. कौन? Now ask, what is your question? Yes, I have 5 questions. Swamiji, the mind loves variety. Now, to increase japa, can I use 2 mantras? Can I also chant Sri Krishna Sharanam Mama, because I love Lord Krishna? The thing is, why not give the mind so that it gets engaged by hook or by crook to increase the intensity, to keep its interest? Can I take another mantra also, besides the one given by my guru? No. Okay. Okay. As far as possible, whatever variety is there, that is enough variety. Okay. At this age, don't try to increase the variety. Okay. Even if you get one mantra, after 1 year, you again ask the question, can I have another mantra? Okay. Yes. Mind will never be satisfied with variety. Remember? Sure. Swamiji, there's a question. How can you please advise on how to make God more and more my own? Can you advise on that? Try to do Leela Chintan. Okay. Shri Ram Krishna's Leela, Shri Ram Krishna is talking to people, Shri Ram Krishna, how affectionate Shri Ram Krishna is, how is he restless for Narendra, how is he restless and helping other people. Why your Ishta has got so many affectionate aspects, Krishna, Ram, etc. Those meditate on that, and in that case, your mind will become more and more attached. Okay. Swamiji, they say, how can sense enjoyments become positively bitter? They say, because, okay, they don't interest you, but how can one increase intensity where sense enjoyment becomes like definitely bitter, positively bitter? How do I reach that maturity? By vichar only. Okay. The next question is, can I do Likit Japa when the mind is positively rebellious? Besides, I find that Likit Japa gives excellent concentration. And the second question is... What was that? Written Japa? Written? No? Likit, No. yes. Written. Yes, I okay. found the mind becomes really focused. Okay. I found, and now the question that arises that the mantra is the same as it's very auspicious. Now, when I write it out, and nobody should know my mantra. So when I write it and I tear it up, that's desecration. Now, what do I do? No. You say you do japa, right? You can write the mantra and then afterward burn it. Burn it. Okay. You can burn it, no difficulty. Paper must not be kept. Okay. Or you can take a slate, electronic slate, where you can wipe it off. No, it's much better by written on a paper. Right, you write it, but it can be wiped off. Electronic slate is there. Okay. Swamiji, this, one of the questions which Dilip Bhai, or somebody asked, Dilip Bhai only asked, that, about this thing of being young and the mind that you should be young, it should be before puberty and all that. Now, the question that arises is that like, for example, Kak Bhushundi, all his disciples, they were very mature disciples. They were very old.
because the kind of, does youth have to do with age, or does it have to do with maturity of mind? Now, if, Age also is important. but the more maturity, you may be very Okay, old. but even then, at that time, the mental energy is less. But if you do yoga, you have a lot of energy. At old age, mental energy becomes less. You would not, if you're very good, you have to practice yoga, and even at 60 or 70, you can concentrate for a longer hour. Very good. No, but very good. Not difficult about it. Okay. Ah. Swamiji, this Manasik Puja, okay, they normally Manasik Puja is considered superior to physical puja. But I have noticed that the kind of intimacy one feels when one I didn't believe this till I started doing it, because it was just till about a year and a half ago that I started offering flowers and stuff like that. But I find that the kind of feelings are much more deep when it's actually physically done than mentally done. So Very it's good. Very good. So- Do it. Very good. Okay. Okay. So then do it. not that my mental is superior. Very good. Whatever it is, they will do it. A little, Whatever little, makes you closer, right? little physical puja is very good. And then Okay. constantly, if you are doing, you're putting flower there and incense there, lamp there, a state might come when you are offering flower and you get so deep concentration in flower meditative that you start meditating even at that moment. Yes, Yes, Swamiji, that happens. Yes, Yes. that can happen. Yes. Yes. Swamiji, Thank you. हो गया नहीं? thank नहीं you. हुआ? I'm done. Okay. Yes, part one done. अच्छा, okay. So हो गया? Shall we stop? Yes. Yes. Yes, Swamiji. Om Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Ram Krishna Arpanamastu. Okay. Thank you very much.